Assalamu alaikum and welcome to English class with Qaisar Bashir. Dear students and dear viewers, like the previous videos, this video is also going to be very helpful and very important for you. Because in today's video, I have selected another beautiful poem from class 8th English textbook for discussion. But before I disclose the title of the poem, I would like to tell you, keep your notebook, pen or pencil ready so that you can write down all the important details that I'm going to be sharing with you through this video. Now, without wasting much of our time, let's get started. Dear students and dear viewers, in today's video, we're going to read the poem Prayer for Strength. We're going to study it in detail. After reading or studying the poem, we shall infer the message or theme of the poem. And finally, we'll find out the literary devices that the poet has used in the poem. But before we get into the video, let's learn a few things about our poet, Rabindranath Tagore. Dear students and dear viewers, Rabindranath Tagore was born on 7th of May 1861 and he died on 7th of August 1941 in Bengal, India. Dear students and dear viewers, Rabindranath Tagore was popularly known by various names like Gurudev, Kobi Guru, Biswa Kobi. He was a Bengali poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He won Nobel Prize in Literature in 1913 for his songs for his poetic collection Gitanjali, which means song offerings. Dear students and dear viewers, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेयर होता क्या है और स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। वेल, प्रेयर को उर्दू में दुआ कहते हैं या प्रेयर को हम इबादत करना कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि हम किसकी इबादत करते हैं। वेल, द आंसर इज सिंपल, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है उसे हम इंग्लिश में सप्लिकेंट कहते हैं, यानी खुदा से इल्तिजा करने वाले को, खुदा से इल्तिमास करने वाले को, खुदा की बंदगी करने वाले को सप्लिकेंट कहते हैं, राइट। अब रहा वर्ड स्ट्रेंथ, इसको हम उर्दू में ताकत या इंग्लिश में पावर कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये जो पोएम है इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर, जहां पे पोइट और स्पीकर ऑफ द पोएम अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह पाक को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ताकत अता करे ताकि वो उन तमाम प्रॉब्लम्स को, उन तमाम हर्डल्स को ओवरकम करें और अच्छी ज़िंदगी, यानी वो ज़िंदगी जो अल्लाह उसे चाहता है वो इस दुनिया में गुजारे। और वो कौन सी ज़िंदगी है? वो ज़िंदगी जहाँ पे वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, लोगों की मदद करें, गरीबों के काम आए और उन सारे इविल्स से बाज रहें जो इविल्स इंसान को अल्लाह पाक से दूर करते हैं। Therefore, in this poem, the poet actually wants to overcome all those evils, all those problems, all those hurdles that actually become barricades for him to reach Almighty Allah or to follow the right path, that is the path that can lead him to paradise. Dear students, ये जो poem है, it's taken from Rabindranath Tagore's beautiful collection of poems, Gitanjali. And this is the song number 36 from that collection. And ये जो poem है, it's addressed to God. This is my prayer to thee, my Lord. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the penury of my heart. Give me the strength
lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Let's study the poem Prayer for Strength. This is my prayer to thee, my Lord. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. To students, in these lines, the poet addresses his creator, God, and requests him to hit at the root of penury in his heart. The students, strike means hit something with a purpose to mend it. What does the poet want his God to mend? Well, he wants his God to mend his heart, which has been occupied by penury. What does penury mean? It means extreme poverty. Now the question is, what has made the poet's heart poor? Well, the answer is simple. Actually, evils like jealousy, hatred, etc. have made his heart as hard as a stone. This is why he says that in his heart, root of penury has made a home, and it lacks compassion. It lacks love, sympathy, empathy for his fellow beings, for his relatives, for poor. This is why he says his God to strike at the root of penury in his heart. Right? He wants his God to purify his heart. Right? He rather repeats the word strike. And this shows how intensely he is requesting his creator, his God. Okay? And then he goes on to say, give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. और यहाँ पे पॉइंट अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहता है कि ए मेरे अल्लाह, मुझे ताकत दो, मुझे पावर दो, ताकि मैं ज़िंदगी में, अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हो या गम हो, उन गमों में, उन खुशियों में सिर्फ अपने क्रिएटर को याद करूं। क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान को बहुत सारी खुशियां मिलती हैं और उन खुशियों के साथ वो अपने अल्लाह पाक को भूल जाता है, या कभी कभार इतने गम मिल जाते हैं कि वो पता नहीं क्या कर बैठता है, और जिसकी सूरत में, और विद द रिजल्ट वी कैन से he forgets his creator, he forgets his God. इसीलिए यहाँ पे पोइट अपने अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहता है कि चाहे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो या गम, वो अगर किसी को याद करे या अगर कोई उसके दिल में हो, तो वो क्या हो, वो कौन हो? Almighty Allah, his creator. राइट? तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन याद आ रही है, एक गज़ल की, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। तो यहाँ पे अल्लाह पाक जो है उसके दिल में रहना चाहिए। किसके दिल में रहना चाहिए? शायर के दिल में। और यहाँ पे हमारे लिए एक लेसन भी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हो या गम,
हम अपने क्रिएटर को कभी भी भूलने नहीं चाहिए, यानी हमें हर हाल अपने क्रिएटर को याद करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, सच्चे रास्ते पे चलने चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट जो है वो अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहता है कि ए मेरे अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे ताकि अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हो, गम हो, फिर भी मैं अगर किसी को याद करूँ तो वो आप होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह पाक से मुखातिब होकर वंस अगेन पोइट यह कहता है कि ए मेरे अल्लाह आप मुझे ताकत दो, आप मुझे पावर दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों पे निसार करूँ, दूसरे लोगों के लिए कुर्बान करूँ। यानी यहाँ पे पोइट कहता है कि वो इस ज़िंदगी में दूसरे लोगों के काम आए, दूसरों की मदद करें, राइट। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि मेक हिज लव फ्रूटफुल एंड सर्विस, राइट। तो उसके बाद वंस अगेन शायर कहता है कि गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी उसके पास कोई गरीब आ जाए, मुफलिस आ जाए और उसे कुछ मांगे, यानी उसके सामने हाथ फैलाए, तो उस वक़्त पोइट जो है वो कहता है कि वो उस बंदे को रिजेक्ट ना कर पाए। डिसओन होता है रिजेक्ट करना, क्या होता है? रिजेक्ट करना। यानी अगर कोई बंदा जो मुफलिस हो, गरीब हो, उसके सामने हाथ फैलाए, उसको कुछ मांगे, तो तब पोइट जो है वो उसको इनकार ना करे। तो यहाँ पे हमारे लिए लेसन है कि अगर कभी भी कोई बंदा जो मुफलिस है, गरीब है, वो हमें कुछ मांगे, हमारे सामने हाथ फैलाए, तो उस वक्त हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। तो यहाँ पे वंस अगेन अल्लाह पाक से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मुझे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उस वक़्त मुझे आप इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे ताकि मैं दुनिया के जालिम बादशाहों के सामने हाथ ना फैलाऊं, उनके सामने ना झुकूं, राइट। इंसोलेंट मीन्स रूड, माइट मीन्स पावर। तो इसका मतलब है दुनिया के जो जालिम बादशाह है, यानी जालिम हुक्मरान है, उनके सामने शायर नहीं झुकना चाहता है। तो यहाँ पे हमारे लिए लेसन यह है कि अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हमें जालिम बादशाहों के सामने, जालिम हुक्मरानों के सामने झुकना नहीं चाहिए, राइट। उस वक्त हमें एक ही काम करना चाहिए, वो है कि हमें अपने अल्लाह पाक को याद करना चाहिए, राइट। एंड देन द पोएट गोज ऑन टू से गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबाउट डेली ट्राइफल्स। तो यहाँ पे पोइट अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहता है कि ए मेरे अल्लाह मुझे आप ताकत दो, मुझे आप पावर दो ताकि मेरी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजरे और मैं उन नॉनसेंस एक्टिविटी के साथ, वैल्यूलेस एक्टिविटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड ना करूं, यानी अपनी ज़िंदगी वेस्ट ना करूं उन नॉनसेंस एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने में, उन नॉनसेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो वैल्यूलेस है, जो दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह है और जो उसकी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है। यानी यहाँ पे वो अच्छी बातों को डिस्कस करना चाहता है, उन बातों को डिस्कस करना चाहता है जो उसे अल्लाह पाक के नज़दीक ले जाए। एंड फाइनली द पोएट गोज ऑन टू से गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल। और आखिरकार अल्लाह पाक से मुखातिब होकर शायर ये इल्तिजा करता है कि ए मेरे अल्लाह मुझे फाइनली आप ईमान बख्श दें, यानी अगर मेरा खातिमा इस दुनिया में हो तो वो सिर्फ आपके लिए हो, यानी आपकी याद में हो। यानी मैं अगर किसी को मानूं तो वो एक खुदा को मानूं, यानी वननेस ऑफ गॉड, मोनोथियज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथियज्म यहाँ पे है। इसका मतलब यह है कि पोएट जो है वो एक अल्लाह को मानता है, एक क्रिएटर को मानता है और उसी क्रिएटर को मानता है जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको क्रिएट किया है, जिसने उसको इस दुनिया में लाया है और जो उसे अपने पास बुलाएगा, राइट। The students, let's learn about the poetic devices that the poet has used in the poem. Well, the first poetic device that the poet has used in the poem is called apostrophe. What is apostrophe? Well, it's actually a direct reference to something or somebody which is
absent, which is not present, right? And the example of apostrophe can be seen in the very first line of this poem, right? As you can see here, the poet addresses his Lord, his creator, right? Since the creator is not in front of the poet or before the poet, right? He is simply addressing something which is abstract, something which is absent. So here is the example of apostrophe in the poem, right? And the second poetic device that the poet has used in the poem is called personification, right? The example of personification can be seen right here, a root of penury. As you can see, poverty has no roots, right? Trees have roots. And the third poetic device that the poet has used is called anaphora. And the example of anaphora is very evident in the poem. As you can see, give me the strength, give me the strength, give me the strength is an example of anaphora. What's anaphora? It's actually a repetition of a phrase or a word at the beginning of consecutive lines in a poem, right? So which phrase is used or rather repeated in the poem? It's the phrase give me the strength. So give me the strength is the example of the poetic device anaphora. Dear students, let's understand the themes that the poet has highlighted in the poem. The first theme that the poet has highlighted in the poem is called monotheism or tawheed. Monotheism or tawheed means belief in oneness of God, or believing in the existence of one God, submitting yourself to one God, the God who has created you, right? And the next theme that the poet has highlighted is shunning the evil ways and living a pious life, right? So here the poet actually highlights that we should shun the ways of evil and live a pious life, live a good and sacred life. And the final theme that the poet has succeeded in highlighting is that we should always help the needy, help the poor. Dear students, it's now time for the homework. Try to answer the questions. What is prayer? Why does the poet want his Lord to strike at his heart? What does the poet wish to do or be in the poem? What should be our attitude towards the poor? Dear students, read the poem again and identify which literary devices have been used in the poem. Give examples from the poem. Dear students, thank you for watching this video. If you liked today's video, give it a thumbs up and share this video.